इनफर्टिलिटी हेइछि बोली आमे भाबिबा केतबेले डॉक्टर कर consultations आमे नबा उचित. Now you see planning is also very important. Nowadays male and female everybody is busy. They do not have time for intercourse. Erectile dysfunction and all जोटा males मानको problem हुए that is also very common because of the stress they have. यदि आपण less than 35 अछंती आ आपण try करछंती properly 1 year ही जाईची you are not getting pregnant you should consult. If you are more than 35 then you cannot wait for 1 year. 1 year पई wait करिबेनी 6 मास जदी हे गला तो consult करिबे. IVF कहले एबे भी बहुत सारा लोक भाबती सो रिस्की जदी फेलियर हे गला केते टाइम्स करि परिया दरकार साइड इफेक्ट्स हे जिवो कि नेक्स्ट टाइम जदी नॉर्मल बेबी न होबो. More than 10 million babies have been born worldwide with this procedure called IVF and I would say it is a boon and blessing for mankind. बहुत सारा लोक माने भाबंती कि जेनेटिक प्रॉब्लम होबो कि बेबी भीतर किछि डिफेक्ट हे जिवो जोटा IVF करचंती अगेन दैट इज अ मिथ. बुठी हमें देखिलु कि IVF सेंटर्स खोलिबा को आरंभ कला तो पीपल माने केमती जानिबे कि नहीं दिस इज द परफेक्ट IVF सेंटर. So transparency is very important in IVF I would say. पहले कपल केमती जानिबे से माने ऑलरेडी ठकामीरो शिकार हे गेले. There is no transparency. सब papers they are not giving you most of the papers. जदि से माने कहउचंती unnecessary extra treatment पाई कि आउ भी किछि extra surgeries पाई. IVF is not cost effective एबे भी लोगों को मन रही. बहुत सारा पेशेंट्स मंथली ट्रीटमेंट होचंती बहुत सारा मेडिकेशन दिया होची सेटा जदि आपण ऐड करिवे approximately 2-3 years रो it will all come back to IVF का सिंगल साइकिल. IVF रे कंसीव करले तो सेकंड टाइम आपण नेचुरल कंसीव करि परिबे नाही. समस्त को नमस्कार. ओडिशार मोस्ट पॉपुलर हेल्थ पॉडकास्ट को स्वागत करुछि ऋतुपर्णा. दर्शक बंधु सबु कपल माने चाहती गोटे सुस्थ संतानटीए किंतु किछि मास ट्राए कला परे बा किछि वर्ष भी ट्राए कला परे जेतेबेले संतान सुख पाई न थांती सेतेबेले आजि कालीर दुनिया विषय रे कहि परिबा IVF ट्रीटमेंट को जानती. किंतु IVF गलाले मनरे बहुत सारा प्रश्न उठे. एटा रिस्क फैक्टर नुहे तो साइड इफेक्ट्स हबनी तो अच्छा ये तो निश्चित भाव में कॉस्टली होइथिबो. आउ IVF गला बेले जदि आमको कौन से सपोर्ट न मिलिबो जदि प्रेगनेंसी बेले मिसगारेज हो एमती बहुत किछि कथा. जदि आपण कौन सी IVF ट्रीटमेंट करूछंती ताहले सेठी आपण ठकामीर शिकार हेबेनी तो ऑथेंटिक IVF सेंटर केमिति जानिबे आज इन डिटेल कथा हबा कहीं आजिर पॉडकास्ट आपण मानक पई जो माने प्रेगनेंसी प्लानिंग करूछंती IVF ट्रीटमेंट करिवे बोली भाबुछंती बा ऑलरेडी IVF ट्रीटमेंट रे आगे गलेनी. आजिर वीडियो केवल आपण मानक पई एंड जाय निश्चय देखिबे. आज आम सहित इन डिटेल कथा बा पई अछंती मणिपाल हॉस्पिटल डू सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट IVF इनफर्टिलिटी एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोनिका गुप्ता मैडम. चलंतु स्वागत करिबा कथा हबा. नमस्कार मैडम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. डॉक्टर मोनिका हमें IVF ट्रीटमेंट तार रिस्क फैक्टर साइड इफेक्ट से सब विषय तो आम कथा ही हबा बट फर्स्ट मुझे जानापी चाहिए कि कौन कौन दिग प्रति आम ध्यान देले इनफर्टिलिटी समस्या दूरे रहा. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एज. आपण प्लीज स्टार्ट प्लानिंग योर प्रेगनेंसी एट एन अर्ली एज. जेबे आपण लेस देन 35 अछंती दैट टाइम प्रेगनेंसी चांसेस बहुत बेसी अच्छी. मोस्ट फर्टाइल पीरियड इज बिटवीन 25 to 30. सो से टाइम रे आपण स्टार्ट करंतु प्लानिंग करवा. डिले करंतु नाही प्रेगनेंसी सेटा सबुठ इंपोर्टेंट फैक्टर. प्लस आपण मानकु जानियार अच्छी जो मानकर साइकल्स रेगुलर होची को टाइम रे रिलेशन रखिले प्रेगनेंसी चांसेस बेसी अच्छी. तो जनरली जो मानकर रेगुलर साइकल्स होची से माने पीरियड रो 9th डे रु 20th डे मझी रे रिलेशन रखिबे. एवरी डे रखिया दरकार नाही. एवरी 3rd डे रखिले रिलेशन देयर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी. आपणकर लाइफस्टाइल टिके मॉडिफाई करिवे. ओवरवेट जोटा वेट गेन होची आजिकली बहुत बेसी बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल ताकू अवॉइड करिवे. जदि आपणकर ओजन बेसी अच्छी ट्राई टू लूज योर वेट. देयर आर सो मेनी थिंग्स. पेशेंट्स कहते वी कांट लूज वेट बट इट इज इम्पॉसिबल. आई हैव पेशेंट्स हु हैव लॉस्ट इवन 20 kgs वेट. सो इट इज नॉट इम्पॉसिबल. जदि आपण डिटरमाइंड अछंती यू कैन डेफिनेटली लूज वेट. एक्सरसाइज करंतु रेगुलरली डू एक्सरसाइज डू योगाज किछि भी रिलैक्सेशन एक्टिविटी. स्ट्रेस जोटा एते होची लाइफस्टाइल रे ताकू टिके कमेबार अछि. तो जहाँ वॉट एवर इज योर हॉबी स्पेंड हाफ एन आवर ऑन योर हॉबीज वेदर इट इज सिंगिंग डांसिंग रीडिंग बुक्स वॉट एवर. से स्ट्रेस टा टिके कमिले डेफिनेटली आपनकर फर्टिलिटी बूस्ट हबो. हैव अ हेल्दी डाइट एंटीऑक्सीडेंट्स जो फूड इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स दैट विल हेल्प इन इंप्रूविंग योर फर्टिलिटी. फ्रूट्स हला नट्स हला वेजिटेबल्स हला इन कंज्यूम दोज थिंग्स इन योर लाइफस्टाइल. अवॉइड फैक्टर्स विच विल हैव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. कोटा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करूची आपनकर स्पर्म और एग्स को डैमेज करूची. अल्कोहल स्मोकिंग ड्रग्स ऑल दीज थिंग्स डैमेजिंग है ना. सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स.
ये सब अवॉइड कले योर स्पर्म इन इक्वालिटी विल इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली ये जदि आपन को लगुच कि आपन किसी प्रॉब्लम अच्छी ऑलरेडी डॉक्टर हैज डायग्नोज्ड सर्टेन कंडीशंस जमती कि पॉलिसिस्टिक अच्छी एंडोमेट्रियोसिस अच्छी डू नॉट डिले इमिडिएटली कंसल्ट दी डॉक्टर बिकॉज जिते जल्दी आप प्लान करेंगे जिते जल्दी आप कंसल्ट करेंगे ये सब प्रॉब्लम रे तो यू विल गेट प्रेग्नेंट पेशेंट्स अच्छा एंडोमेट्रियोसिस अच्छी जानी सर्जरी कर दूसरी तापर भी वेट करुँच 1 year 2 years immediately after surgery chances of pregnancy are very good in endometriosis the more you delay say डिजीजटा आउथरे आसब रिकरेन्ट हम डिजीज जिते बेसी रिकरेन्ट हम से बेसी चांसेस आपंकर कमी कमी जीव प्रेगनेंसी कन्सीव करें आउ भी अनेक कारण अच्छा इनफर्टिलिटीर ता भितर अच्छी आपंकर ट्यूब्स जदि को इन्फेक्शन ट्यूब्स ब्लॉकेज हो पारे कि आपंकर ओवरीर डैमेज ड्यू टू सम सिस्ट मोस्ट कॉमन जोटा आजिकल एंडोमेट्रियोसिस कि चॉकलेट सिस्ट होची जोटा ओवरीज को डैमेज करुच्ची तापर आपंकर यूट्रस रे भी किसी प्रॉब्लम्स हो पारे ट्यूमर्स अच्छी फाइब्रॉइड अच्छी जोटा नॉन कैंसरस अच्छा जोटा आपंकर यूट्रस को डैमेज करुच्ची एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेल फैक्टर भी अच्छी पुरुष मनकर भी स्पर्म काउंट आउ स्पर्म रो क्वालिटी ऊपर डिपेंड करुच्ची कि आपन को प्रेगनेंसी हो पारिबो कि नहीं प्लस ता अलावा फीमेल्स मानकर भी ओव्युलेशन प्रॉब्लम जोटा एग मंथली रिलीज हवा कथा बहुत सारा फीमेल्स मानक आजिकल जोटा आम देखुचु पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन टुडेज एज PCOS सो से जो एग्सटा रिलीज हवा कथा मंथली सेटा मंथली रिलीज होनी तो से जोगु तांको प्रेगनेंसी कन्सीव होनी सो दीज आर इन अ नटशेल दी मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी डॉक्टर मोनिका बट आजिकालीर सोसाइटी रे भी रही जदि जड़े माने कपल जदि पेरेंट्स हो पार ना ताले मोस्टली सब किसी रीजन दिया जाए कि फीमेल रही किसी प्रॉब्लम अच्छी एक्चुअली मेल और फीमेल भितर किसी डिफरेंशिएट अच्छी जदि जड़े कपल पेरेंट हो पार ना तो यहीटा भी गोटे बहुत भूल धारणा कि फीमेल्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी जिते परसेंटेज फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल दैट मच परसेंटेज ओनली मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल इट इज़ एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल टू हैव अ चाइल्ड तो आई वुड मतलब इट इवन स्टैटिस्टिक्स एंड जहाँ भी आम पाखे डेटा अच्छी दैट ऑल्सो सेज दैट मेल्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल तो जिते परसेंटेज आम ब्लेम करुचु फीमेल को मेल्स आर ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड इन द सेम परसेंटेज मैम जदि इनफर्टिलिटी कथा हवा ताले साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल रो किछि प्रेशर रहे कि माने इनफर्टिलिटी रो एबे आपण माने तो जानिचंती हम सोसाइटी केमती अच्छी सो सिंस द फीमेल्स आर सो मच ब्लेम्ड फॉर दिस कंडीशन एंड दे आर ऑलवेज इन स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस अगेन इज वन फैक्टर इनफर्टिलिटी पाई भी स्ट्रेस होची स्ट्रेस पाई अगेन इनफर्टिलिटी होची दिस इज अ विशियस सर्कल आपनकर लाइफ रे जदि स्ट्रेस अच्छी इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट प्रेग्नेंट एंड वंस दैट इनफर्टिलिटी हैपेंस अल्टीमेटली दैट स्ट्रेस also builds up so kind of cycle yes and then there are so many reasons of infertility जेमती कि polycystic ovarian syndrome अच्छी जो थे पेशेंट मानकर पीरियड्स आसुनी दे आर गेनिंग टू मच ऑफ वेट तांकर ओजन बहुत बढ़ी बढ़ी जाउचे एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लूज वेट सेटा भी दैट आल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन इन देम एंड तांकर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आल्सो बिकॉज ऑफ देयर कंडीशन व्हिच इज कॉजिंग इनफर्टिलिटी नॉट बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी पर से तापर देयर आर अदर कंडीशंस जेमती कि एंडोमेट्रियोसिस की चॉकलेट सिस्टम कहली विच इज अगेन अ वेरी पेनफुल कंडीशन सो एते पेन हुए पेशेंट मानकू कि से माने इंटरकोर्स भी प्रॉपर्ली करि पारु नहांती तो जदि से इंटरकोर्स ही करि परिबेनी हाउ विल दे गेट प्रेग्नेंट सो दिस अगेन इज अ वेरी डिस्ट्रेसिंग फिजिकल कंडीशन जोटा फीमेल्स मानकू इफेक्ट करूची तापरे अदर कंडीशंस जोटा इनफर्टिलिटी करूचे जेमती कि फाइब्रॉइड अच्छी समटाइम्स दिस फाइब्रॉइड्स आर सो बिग इन साइज दैट तांको मिसकैरेज हो जाउची से दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट बट देन दे आर गेटिंग मिसकैरेज रिपीटेड मिसकैरेज होची कि तांको बहुत हेवी ब्लीडिंग होची सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन विच द प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी तांकर फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करूची लाइफस्टाइल भी मैडम बहुत प्रकार चेंज हो गलानी एंड फीमेल माने जेहेतु घर बाहर ए बहुत माने हैंडल करुछंती तो तांकर जो लाइफस्टाइल फूड हैबिट ड्रिंकिंग स्मोकिंग is there so yes definitely this is a very important cause because now most of the females are career oriented they are working and they are having jobs so they are getting married late lot of job pressures plus they get into habits like smoking drinking not only these drugs use is also very common among young girls तो जो smoking alcohol अच्छी and drugs अच्छी drug abuse जोटा होची आजिकली that is definitely affecting the ovaries and even in
men that is affecting the sperm. It sperm को भी affect करूची, ovaries को भी affect करूची. On top of that, that is causing irregular cycles, that is making them gain weight. Say ओजन भी बेसी बेसी होची because of all these habits. And obesity is very important cause. Obesity पाई because of weight gain, they are not able to ovulate properly. माने जो एक तांगर release हवा कथा monthly, that is not happening again. जदि इनफर्टिलिटी रो समस्या कथा कहबा मे बी लेट रे प्रेगनेंसी पई प्लान करबा और एनी अदर हैबिट्स कथा हमें कहिला बा आपन को के सजेस्ट करबा छ तमे एटा खाई दियो बा किछि वर्ष पिला न हबा पे मन जो पिल्स वगैरह खांती तो सेटा भी गोटे मेन कॉज की इनफर्टिलिटी हमारो. सो एज सच डायरेक्ट नाही कि जोटा से माने पिल्स खांती डिले करिया को दैट इज कॉजिंग इनफर्टिलिटी बट बिकॉज सेटा खाई कि अपन माने बहुत लेट रे प्लान करिया स्टार्ट कर दोचंती अपन भाबुचंती कि ठीक अछि वी विल प्लान आफ्टर 34-35 इयर्स ऑफ एज. तो ओसी पिल्स जोटा अच्छे जोटा प्रेगनेंसी को अवॉइड करिया पे निया होची दोज आर अदरवाइज सेफ मेडिकेशंस बट इफ यू टेक देम फॉर प्रोलॉन्ग टाइम एंड आपण माने सेमती ही एज एडवांस हे जाउची बिकॉज आफ्टर टेकिंग दैट यू डोंट वांट एट दैट टाइम सो दैट कुड बी द रीजन बट वी कांट डायरेक्टली लिंक ओसी पिल्स विथ इनफर्टिलिटी. तो एक्चुअली हमें इनफर्टिलिटी हेई छै बोली हमें भाबिबा केतबेले एंड डॉक्टर कर कंसल्टेशंस हमें नबा छै. यस तो जेमती आमे कहूचु कि एज इज वेरी इंपॉर्टेंट तो जो मैंने भी लेस देन 35 इयर्स एज अच्छी आउ दे आर प्लानिंग एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर आपन को लागुची 1 ईयर अपन प्रॉपर्ली प्लान करचंती बिकॉज नाउ यू सी प्लानिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अ डेज मेल एंड फीमेल एवरीबॉडी इज बिजी दे डू नॉट हैव टाइम फॉर इंटरकोर्स बिकॉज दे आर सो बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू राइट 10 o'clock because baby planning before 5-10 years is not that कि planning करी baby करी. हाँ तो सेमानो को पकड़े टाइम ही नहीं to have intercourse there and the job is so stressful. I have seen and ये जो erectile dysfunction and all जोटा males मानो को problem हुए that is also very common because of the stress they have. So maybe everything else is normal but since they are not able to have intercourse माने intercourse ही करी पारु नांदी properly in time and regularly that is one of the very important reasons that they are not able to get pregnant. प्लस जदि आप लेस देन 35 अच्छा आप ट्राई कर प्रॉपर्ली 1 ईयर हो जाइए यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट यू शुड कंसल्ट. इफ यू आर मोर देन 35 देन यू कैन नॉट वेट फॉर 1 ईयर 1 ईयर वेट करेंगे 6 मास जदि होगला तो कंसल्ट करेंगे. जदि ऑलरेडी आपन को किसी डिजीज अच्छे आप जानते ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस होती कि आपन को एंडोमेट्रियोसिस अच्छी इमीडिएटली कंसल्ट करेंगे. पॉलिसिस्टिक ओवरीज डायग्नोसिस आपन पीरियड्स रेगुलर होनी नो नीड ऑफ वेटिंग बिकॉज वेट कले तो हेनी ना पीरियड्स ही होनी तो प्रेगनेंसी केमती हम तो यू कंसल्ट इमीडिएटली. सो दीज आर द सिचुएशन जो आम कहूँ कि आप इमीडिएटली आसबे जदि आपन को ऑलरेडी अच्छी हिस्ट्री किसी ऑपरेशंस होती सर्जरी होती बिकॉज दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर कि ट्यूब्स ब्लॉकेज हो पाए आपन को रिकरेंट इन्फेक्शन होची तो यही सब जिनस आप इमीडिएटली कंसल्ट करेंगे. एंड इफ यू आर मोर देन 40 देन आल्सो यू कंसल्ट इमीडिएटली डू नॉट वेट. डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम. यस यस यस. तो इनफर्टिलिटी रे मैडम अल्टरनेटिव है IVF टेस्ट ट्यूब ओनली? No, not at all. Infertility, we have a lot of treatment before IVF and test tube. जमती कि आई वुड से आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जमती मु कहली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हस्बैंड इज नॉट एबल टू हैव इंटरकोर्स और देयर इज अ कंडीशन इन फीमेल्स जो एते पेन हुए ड्यूरिंग इंटरकोर्स दैट तांकर केबे भी आज पर्यंत इंटरकोर्स ही नहीं पेनिट्रेशन ही नहीं बिकॉज फीमेल्स हैव सो मच ऑफ पेन. सो दिस विल नॉट गेट ट्रीटेड विथ IVF. देयर आर अदर सो मेनी ट्रीटमेंट वी काउंसल देम आमे तांकर वी गिव मेडिकेशंस फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड तापरे ता पूर्वरु बहुत सारा मेडिकेशंस अच्छी. देन देयर इज अ ट्रीटमेंट कॉल्ड IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जो थरे आमे मेल्स रो सीमेंट प्रोसेस करिकी फीमेल्स रो यूट्रस रे थ्रू अ स्मॉल इंजेक्शन वी इंजेक्ट इट इनसाइड द यूट्रस. सो दैट इज आल्सो अ ट्रीटमेंट. प्लस देयर आर सो मेनी मेडिकेशंस पॉलिसिस्टिक ओवरी रे आमे दोचू फॉर देम टू गेट प्रेग्नेंट. सो IVF इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन. Maybe the counseling before the counseling is the perfect path. Yes. Evaluation is very important. First you have to find out cause कौन अछि, what is the reason they are not getting pregnant, and accordingly that treatment will depend. तो भाबंतु नै कि आपण जदि प्रेग्नेंट ही परनंती IVF is the only solution. That is not the only solution. There are so many other treatments, so you have to consult the right doctor. मैम आउ गोटे जिनस IVF रो जतबेले कथा आलोचना हैला बा चर्चा को आसिला कोठी ना कोठी सबुठी आमे देखिलु कि IVF सेंटर्स खोलिबा को आरंभ कला तो पीपल माने केमती जानिबे कि नहीं दिस इज द परफेक्ट IVF सेंटर. एक्चुअली IVF विषय जदि चर्चा करिबा देन व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसीजर एंड तार स्टेजेस गुडी का कोन रही छी. सो देखंतु दिस इज आल्सो ट्रू कि आजिकली बहुत सारा IVF सेंटर्स खोलिलानी बहुत मुश्किल अच्छे पेशेंट मानक पाए एग्जैक्टली टू जज व्हिच इज अ प्रॉपर IVF सेंटर. यस लाइक अ नॉर्मल मैन तो हमें is best or this is worst. Yes but yes आपण माने निजे टिके you have to do a little research find out कि को डॉक्टर्स अछंती तांकर कोन क्वालिफिकेशन अछि what is the experience that the doctors are having
and then you can consult patients who are already getting treatment over there. And plus ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ବି when you talk with the doctor you can also understand that the doctor is telling the right thing or not. So there are so many patients ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି IVF କରେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ସେଣ୍ଟରରୁ, they don't know what has happened. ସେମାନେ ଖାଲି କୁହନ୍ତି ଆସିକି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର IVF ହେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା କେତେ ବାହାରିଥିଲା ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ବ୍ରିଓସ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା, ଫ୍ରିଜିଂ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଥିଲା। So transparency is very important in IVF, I would say. मतलब you have to be transparent. जदि गोटे center is doing transparent job and they are giving everything in writing कि yes आमे आपनकर एते eggs बाहर करिचु, this is the injections that we have started on you and आपनकर एते embryos form हेची तार quality कोन अछि, then only the other center can understand कि कोन exactly treatment हेची. But if you have just done IVF and not written anything, then that is very difficult to say कि that center is doing right job or not. So you have to do research something. You have to do research and plus yes eventually आपण जाई की कथा हेले भी you can judge कि how good that center is. तो मैडम तार स्टेजेस गुड़ी का कौन था है? IVF is again a process which takes a little time. एटा नाही कि आपण आजी भाबिल IVF करिबे और काली प्रेगनेंसी हे जिवो. It is not like that. It will take a little time. So you have to be prepared कि मु एबे IVF करिया को जाउची मते एते टाइम लागिबो. तो आई वुड नॉट से कि सेटा बहुत टाइम टेकिंग अच्छी कि 3-4 मास लगी जाए. एग्स जोटा आमे फॉर्म करूछु तापई वी गिव इंजेक्शंस दैट विल टेक 10 to 12 days. तापर आमे से अंडाटा बाहर करूछु, ताकू लैब रे फर्टिलाइज करूछु, स्पर्म संगे मिसौछु, तापर वी क्रिएट 5 days जो एम्ब्रियोज आमे कहूछु जोटा आपन को यूट्रस रे इम्प्लांट कराबो. सो दैट प्रोसेस टेक्स अराउंड 10 to 15 days. तापर आइदर वी डू इम्प्लांटेशन इन द सेम मंथ और वी माइट वेट फॉर 1 or 2 months डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन एंड देन डू द इम्प्लांटेशन. से जो यूट्रस रे आमे से एम्ब्रियो रखुचु that might take 1 to 2 months time. IVF कहले एबे भी बहुत सारा लोक भावती सो रिस्की, मे बी टेंशन हबो जदी फेलियर हे गला, थरे करे जदी सक्सेसफुल न होला केते टाइम्स करि परिया दरकार. दीज आर थिंग्स एबे भी लोकन को माइंड रे अछि. साइड इफेक्ट्स हे जिवो कि नेक्स्ट टाइम जदी नॉर्मल बेबी न हबो तो आमे ताहो पर निश्चय कथा हबो मैम. हां तो अगेन एटा गोटे मिसधारणा अच्छी कि मिथ अच्छी कि IVF इज अ वेरी रिस्की एंड पेनफुल प्रोसेस. एबे देखो मोर देन 10 million babies have been born worldwide with this procedure called IVF, and I would say it is a boon and blessing for mankind that we have this procedure in place कि आमे पेशेंट मानो को जो माने there is no chance anywhere, there is no hope for couples. Motherhood रो गोटे स्पेशल feelings that can be given by a procedure. जेमति today only I have delivered one patient, से twin pregnancy थिला. She last 4 years हे गला ताको प्रेगनेंसी कंसीव हो नथिला, बट शी इज अ वेरी डिटरमाइंड पेशेंट. सी स्टक विथ मी. तांकर आगे मु नॉर्मल ट्रीटमेंट करली, तापरे अल्टीमेटली शी कंसीव्ड गॉट प्रेग्नेंट, किंतु तांकर प्रेगनेंसीटा ट्यूब रे रही गला. तापरे मते से ट्यूबटा बाहर करिया को पड़ला. तापरे तांकर नेचुरल वे रे हमें बहुत ट्राई करलु, शी कुड नॉट गेट प्रेग्नेंट. तापरे अल्टीमेटली आई डिड IVF. द फर्स्ट साइकिल IVF फेल्ड. तापरे हमें सेकंड साइकिल IVF करलु एंड शी गॉट प्रेग्नेंट. शी हैड ट्विन प्रेगनेंसी एंड टुडे ओनली आई हैव डिलीवर्ड दोस ट्विन्स. वाओ, कांग्रेचुलेशन मैम. एंड सो दैट्स व्हाई keep patient. Yes, keep patience and trust your doctor, because ultimately the doctor will give you the right treatment, and jodi apankar achi, if everything is fine, you will definitely get pregnant. So IVF I would say is not very risky because ebe to techniques are so much advanced. Amaro jo injections asuchi those are so painless, plus the procedure is also very painless because jo ame procedure koru jo egg bahar kariyara seta it is done under anesthesia. So it is just a little time that you have to give to the procedure, but it does not have too much of risks, I would say. बहुत जगह आम देखी IVF सेंटर कहती 100% रिजल्ट एंड जमी आपण भी कहले मैडम कि बहुत जगह जाती कि जानी न था एंड आपण पाखक आसती. तो प्रॉपरली ये सब जिनस को कौन देखिकी कपल जीवा दरकार. तो जो भी सेंटर आपन को कहूँ 100% रिजल्ट, प्लीज डू नॉट गो टू दैट सेंटर. वर्ल्ड वाइड इट इज कोटेड कि IVF रो सक्सेस रेट होची समवेयर फ्रॉम 30 to 50%. एबे आई वुड से कि द लैब हैज सो मच इम्प्रूव्ड ना, द टेक्निक्स हैव सो मच इम्प्रूव्ड दैट इन some cases we say कि even up to 70 to 80% cases we can make you pregnant, but definitely it is not 100%. no. मैडम ताले कपल केमती जानिबे से माने ऑलरेडी ठकामीर शिकार हे गेलेनी एंड से बेस्ट डॉक्टर को पाखक आसीबे.
तो जदि आपन को लागुची कि ट्रांसपेरेंसी नहीं, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, सब पेपर्स दे आर नॉट गिविंग यू मोस्ट ऑफ द पेपर्स, जदि से माने कहउचंती अननेसेसरी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट पाई कि आउ भी किछि एक्स्ट्रा सर्जरीज पाई, जेमती एमती सेंटर्स भी अछंती जो माने कहंती कि आपन को आगे गोटे सर्जरी करबा, ट्यूब बाहर करबा, तापरे यूट्रस भितर रखिबा, बिकॉज बहुत रे कोन वे ट्यूब से पानी भर्ती हो जाए आ सेटा प्रेगनेंसी कंसीव करिया को दिए नहीं, तो से माने कहंती कि ट्यूब बाहर कर दबा, बट इट इज नॉट नेसेसरी इन ऑल द केसेस. तो यू हैव टू सी कि डॉक्टर कौन इंटराक्ट करूचे आपन को संगरे, आपन को आर यू सैटिस्फाइड विथ व्हाट द डॉक्टर इज सेइंग और नॉट, तापरे निजे भी टिके रिसर्च करिवे, है ना. एमती नहीं कि यू ट्रस्ट द डॉक्टर, यस जदि आपन को लागुची से ठीक ठाक कहउचंती देन यू ट्रस्ट 100% एंड स्टिक विथ द डॉक्टर, है ना. बट इफ यू फील कि देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी और बहुत सारा जिनस इज हिडन फ्रॉम यू, देन you should think Don't of go switching for the that. center. Yes. मैडम आमे जानछे कि आईवीएफ करबा माने एटा होची कॉस्टली, माने आईवीएफ इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव एबे भी लोकन को मन रही, मे बी लेमैन माने पैसा हेले ही हम आईवीएफ करि परिबा, इज इट? So IVF is definitely a little more costly than normal treatment, but जदि आपण aggregate देखिबे every month रो cost देखिबे, जोटा बहुत सारा patients monthly treatment होचंती, बहुत सारा medications दिया होची, सेटा जदि आपण add करिवे approximately 2-3 years रो, it will all come back to IVF का single cycle, है ना. So you have to सेटा आपण कर monthly टिके खर्च होची, आपण को जणा पडुनी IVF रे एका संगे सेते की खर्च होची, but most of the couples आजिकले हम देखुछु इवन गाँव रु आसुचंती, most of them are actually willing to pay for IVF and they have that much कि they are able to afford. So any affordable? Yes, it is affordable. Now it is not कि हमें कहबो it is not affordable. Plus sometimes हमें discounts भी दोचु. We have other methods also कि patient can pay in parts. जदि एका संगे दे पारु नाहती तो they can also pay in parts and parts. So that is also there. मैम एमती भी गोटे थाई कि जदि आपण आईवीएफ थ्रू प्रेग्नेंट होचंती तले फर्स्ट 3 मास बहुत ही क्रूशियल थाए. नॉर्मल जदि प्रेग्नेंट अछंती ताठू टिके अधिका आपण को बेसी केयर नबा को पड़े, मे बी वर्किंग वुमेन माने बेसी रेस्ट को जानती. So एटा ना अगेन दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज बहुत सारा सेंटर्स कहती कि बहुत सारा डॉक्टर्स भी कहती एबे आईवीएफ होची तो यू हैव टू हैव कंप्लीटली बेड रेस्ट, पूरा बेड रेस्ट होई कि रहिबे. नथिंग लाइक दैट, लिटिल टिके प्रिकॉशन डेफिनेटली नहीं कि रहिबे, बट जोटा प्रेगनेंसी रे मिसकैरेज रो चांसेस एंड ऑल होची इट इज ऑलमोस्ट सेम. जदि नेचुरल भी आपण कंसीव करचंती दी चांसेस आर ऑलमोस्ट इक्वल टू आईवीएफ प्रेगनेंसीज, बिकॉज एबे हमर हॉस्पिटल रे देयर सो मेनी सिस्टर्स मो आईवीएफ करिछि जो माना करो, से माने आफ्टर द प्रोसीजर आफ्टर 7 days they are coming back ड्यूटी करूचंती, फर्स्ट 3 months ड्यूटी करूचंती. जदि किछि रिस्क फैक्टर अच्छी आपन को ट्रीटमेंट परे, सपोज यू हैव टू इन प्रेगनेंसी कि आपन को ब्लीडिंग होची, एई सब सिचुएशन रे हमें कहूछु कि आपन टिके प्रिकॉशन नै कि रहिबे, टिके रेस्ट करिवे. बट अदरवाइज इफ इट इज अ सिंगलटन प्रेगनेंसी इवन बाय आईवीएफ द रिस्क ऑफ मिसकैरेज इज द सेम. या देयर इज नॉट मच डिफरेंस. तो मैम नॉर्मल डिलीवरी एंड आईवीएफ थ्रू रे जो माने नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड आईवीएफ थ्रू रे प्रेगनेंसी जो होचंती चल ताको पे कौन सब प्रिकॉशंस रही छी. सो आईवीएफ रे हमें खाली टिके इंजेक्शंस एक्स्ट्रा दोछु टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी, नेचुरल नहीं. नेचुरल रे कौन बॉडी भितरु हार्मोन्स बाहरु चे सपोर्ट पई, आ एठी हमें आर्टिफिशियली वी हैव टू गिव सम हार्मोन्स फॉर सपोर्टिंग द प्रेगनेंसी. दैट इज आई वुड से ऑलमोस्ट द डिफरेंस, बट ओनली बिकॉज इट इज सच अ प्रेशियस प्रेगनेंसी. यू नो पेशेंट्स इतने स्ट्रगल करला परे दे हैव गॉट प्रेग्नेंट, so they are also little apprehensive कि madam we will not work so much and all that thing. But I would say continue with your routine activities. पूरा दिन बेड रे सोइबार किछि दरकार नहीं, no need of sleeping on the bed. Physical activity दरकार. Yes, physical activity दरकार. So if you want you may just give break from your work. जदि आपण working अछंती maybe 2-3 weeks you can take a break from your work, but complete bed rest is definitely not advised after IVF. You continue with your routine activities. आईवीएफ करले जमती मैडम कहले टिके स्पेशल केयर दरकार, तो हस्बैंड करो फैमिली करो सपोर्ट केते इंपॉर्टेंट. This is very important because देखो तो already the female is under stress, आउ ता ऊपर ही सब प्रोसीजर होची, मेल्स को तो they just have to give the sperm, so it is not so much of pressure on them. The donation हो गया. Yes, donation हो गया, काम खत्म. It is the female, if she is not getting pregnant even by IVF, the stress is there. If she is getting pregnant तापर bleeding होबो, ये सब जिंस अछि. There are so many things, so family support is very important, I would say. If your husband is supportive, family is supportive, because stress is one reason जोटा कि miscarriage, ब्लीडिंग प्रॉब्लम आउ टाइम पूर्व जो लेबर पेन्स आसे, ये सब जिनस इज मोस्ट समवेयर लिंक्ड विथ स्ट्रेस ऑल्सो. सो जदि आपनकर फैमिली आपन को हैप्पी रखुची, देन देयर आर मोर चांसेस दैट यू विल हैव अ सक्सेसफुल एंड हेल्दी प्रेगनेंसी. मैडम इनी स्पेशल केस रही छी जोटा कि आपण मेंशन करबा पई चाहिबे.
तो देखो यही सब तो मु कॉमन रीजंस कहली बट वेरी वेरी रेयरली वी हैव सीन सच केसेस जमती मो पाखे बहुत ही अटिपिकल केसेस भी अच्छी जोटा कि आई स्पेशली वांट टू डिस्कस इन टुडेज पॉडकास्ट बिकॉज यू नो पेशेंट मानक लगुच कि तार किसी सल्यूशन ही नहीं इट इज दे कैन नेवर गेट प्रेग्नेंट लाइक आई हैव अ फैमिली ऑफ 3 सिस्टर्स 3टा भौणी माने दे आर मैरिड इनटू अ वेल एजुकेटेड फैमिली बट दे हैव नेवर अटेन्ड पीरियड्स तांकर जो पीरियड स्टार्ट हुए सेटा केबे आज पर्यंत स्टार्ट ही हैनी ऑल आर मोर देन 20 years 25-30 years एज ग्रुप रे अछंती and through somebody they got a reference and they came to me and then I evaluated them au mu tankaro test kariki I found out that their ovaries are not functioning they are not functioning from childhood this is a very rare condition in which the ovaries stop functioning and apankaro periods jebe start haba katha 11 to 14 years age re seta start hei pareni au semanku lage ki since period hi honi to they can never get pregnant mane it's so mane yes माने सरप्राइजिंगली कि बिल्कुल भी 3 जनों कर पीरियड yes and I was also surprised because this is the first time I saw in a family 3 sisters having the same problem and all the three were married because it is very rare to find husbands also in females who do not get periods but then I tested and all of them had the same problem तीनटा जाकर same problem थिला कि तांकर ovaries function करूनी तांकर अंडा जोटा रिलीज होबा कथा बिल्कुल भी नहीं it is absent completely तो तापर I started them on hormone therapy मु hormone therapy start करली they started getting periods one by one and then I also counseled them कि it is also possible for you to get pregnant कहीं कि because तांकर hormones नथिला uterus रो size भी small थिला तो with hormone therapy first we increased the size of the uterus तापर जब uterus proper गोटे size रो हे गला then I counseled them to opt for donor eggs now this is again another advanced form of IVF treatment in which by using somebody else's eggs आउ कहार eggs रु आमे pregnancy करि परुचु तो then with the husband semen husband रो sperm use करलु आउ donor eggs use करलु and then one of the sisters has eventually got pregnant and we are planning the same treatment for the other sisters also oh wow this is a very मतलब rare na rarest case मैम किछिटा एबे भी जेमती जदी ले मैन कथा कहिबा एबे भी किछिटा मिथ रहिची तो भाबुची माने एज अ स्पेशलिस्ट आज हमें किछि मिथ ब्रश करिबा तो infertility is the only women's problem so that we've only discussed कि infertility is not only women's problem males are equally responsible so please stop blaming the females को blame करिया बंद करंतु and have a complete evaluation so proper testing करंतु a lot of times हमें देखुछु कि males माने तो चाहू ही नाती टेस्ट करिया पई even if we repeatedly tell them कि देखंतु आपन कर टेस्टिंग इज सबुटु easy you just have to give the semen sample females रो testing is again complicated हमें तांको tube testing करिवु which is very painful procedure so it is very easy to evaluate the male सबुटु आगे तो we should evaluate the males and if the semen is normal then it is fine so males are also equally responsible तो जदि पूर्वरु पिला अछि ताले आपण इनफर्टाइल हे पारिबेनी नहीं there are two terms one is primary infertility आउ गोटे हला secondary so primary हला you have never got pregnant secondary हला आपण कर pregnancy हेथिला छुआ अछि कि नहीं and then आपण pregnant हे पारुनांती so this is again another infertility term जोटा हम यूज करू छु secondary infertility but secondary infertility रे कोन अछि ना कि there are more chances थोरे patient pregnant हे छी so generally there are more chances if everything else is normal for the patient to get pregnant plus it is stress भी नहीं because they already have a child na so that stress factor is also less थरे जदी मिसकैरेज हे गला बा आपण जदी अबॉर्ट कर दे चंदी ताले आपण केबे भी प्रेग्नेंट हे परबेनी no not at all बिल्कुल भी नहीं दैट इज अगेन अ मिथ मिसकैरेज हैज नो रिलेशन विथ इनफर्टिलिटी बट येस बहुत सारा कपल्स एमती ही आसुचंती एबे जस्ट बाहागर हेची मैडम वी डोंट वांट प्रेगनेंसी बट आई ऑलवेज काउंसल देम कि एमती किछि जदी प्रेसिंग रीजंस नाही इन योर लाइफ देयर इज नथिंग कि आपनकर एग्जाम्स अछि करियर अछि कि देन यू शुड ऑलवेज कंटिन्यू द प्रेगनेंसी बिकॉज समवेयर मिसकैरेज केबे केबे किछि किछि कॉम्प्लिकेशंस करे टू सम फीमेल्स नॉट टू ऑल तो जदी सेमती किछि प्रेसिंग रीजन नाही आपण जो जानि कि मिसकैरेज करंती सेटा टिके कम करेबा कथा यू शुड यूज बर्थ कंट्रोल पिल्स इफ दैट इज पॉसिबल आउ गोटे मिथ अच्छी आम साधारणतः भाव लोक कहबार आम शुणीचु जदि आप डेली इंटरकोर्स करेंगे द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज मोर No, nothing like that. Daily intercourse, anyways, it is not possible and not recommended because daily intercourse रे गोटे तो sperm जो semen रो volume अच्छी सेटा कमी जाउची, quality कमी जाउची, plus your interest should also come. So we would say कि week rate
2 times or every third day if you have intercourse, especially say fertile period रे जोटा आपनकर period रो day 9 ru day 20 पर्यंत अछि जो टाइम रे बेसी चांसेस अछि प्रेगनेंसी रहबा पई सेही टाइम रे आपण जदी every third day भी intercourse करले that will also give sufficient opportunity for pregnancy. Birth control pills cause infertility? No, Never. not at all, never. Birth control pills as such does not cause infertility, but if your age and other factors are there, then definitely it. Ma'am, IVF is the only solution of pregnancy. No, again we've discussed IVF is not the only solution of pregnancy. There is so many other treatments. There are medications, there are surgery which can be done. So बहुत सारा जिनस अछि जोटा करी हबो. And आउ गोटे रहिछि जदि हम IVF करिबा तले guaranteed pregnant हबा. नाइ guarantee तो नहीं देखंतु but we try our best to make you pregnant and there are good chances जदि if everything else is normal आपनकर eggs अछि भलो sperms अछि भलो uterus भलो अछि then definitely there is a very good chance of pregnancy. आउ गोटे भी मिथ अछि मैम माने जदि IVF करले इदर बॉय हबो इदर ट्विन्स हबो. Again that is a myth. So IVF does not guarantee a boy or a girl child. Again I say कि जेमती natural pregnancy रे जहाँ chances अच्छी having a male or female से same chances तो अच्छी in एथरे भी IVF. बॉय गर्ल रो सेमती किछि डिस्क्रिमिनेशन हुए नहीं. No discrimination. And twins also depends कि आमे केतेटा embryo transfer करूछु. If because now the embryo quality is so much improved, even single embryo transfer करूछु तो pregnancy conceive हे ही जाउची. So now we've moved towards single embryo transfer. आमे गोटे ही embryo transfer करूछु. We are avoiding having twin pregnancies because twins रे there are so many complications. Yes, तो miscarriage रो chances, time पूर्वरु delivery रो chances, leakage रो chances are so high. So generally we avoid having twins in IVF. IVF risky and बहुत ही painful. No, IVF is not so much risky. There are definitely risks involved with every procedure. जो भी procedure करा हुए body रे ता ऊपर risk तो अच्छी, but it is not so risky that it will harm your life. आउ painful again I would say it is not a very painful procedure. Of course अपन को injections daily नबा को पड़ुची, but the techniques have advanced, the needle technology have advanced, so it is not that painful. मैडम जदि IVF रे कंसीव करले तो सेकंड टाइम आपण नेचुरल कंसीव करि परिबे नाही. No, again that is again a myth. So we have so many cases in which patients IVF plan kara hechi, IVF fail hechi. In the next month they're getting pregnant naturally also. Wow. Again that also happens. So keep trying. If everything your doctor कहिछि कि आपनकर सब किछि normal अछि, unexplained अछि but pregnancy हो नहीं. So never lose hope. Keep trying. Even if the IVF has failed, no one knows. You can get pregnant naturally also. And जदि IVF करछन ताले मिसकैरेज रो चांसेस टा बेसी अधिक आता है. नहीं अगेन मु कहली ना IVF प्रेगनेंसी सेम परसेंटेज रो मिसकैरेज अच्छी एज कंपेयर टू नेचुरल प्रेगनेंसीज एमती नहीं कि आउ बहुत सारा लोक मैंने भावती कि जेनेटिक प्रॉब्लम हम कि बेबी भितर किसी डिफेक्ट हो जोटा IVF कर अगेन दैट इज अ मिथ. देयर इज नो चांसेस दैट बेबीज विल हैव एनी जेनेटिक प्रॉब्लम जेते कि नेचुरल प्रेगनेंसीज रे अच्छी दैट सेम परसेंटेज थ्रू IVF प्रेगनेंसीज भी अच्छी. IVF ओनली मैंने afford by rich person. No, not at all. Again, that is a myth. Everybody can opt for IVF and we have made IVF really affordable for a lot of couples. मैम ताले लास्ट टेक होम मेसेज कौन देबे सब कपल्स मान जो माने आज हमर पॉडकास्ट देखुचंती से मान को कौन आपन का एडवाइस देबे? So my take home message to all the couples is please plan your pregnancy early. Please आपण जेबे भी प्लान करूचंती come and meet your doctor before planning pregnancy. There are so many things जोटा कि हमको we have to look pregnancy plan करिया पूर्वरु भी तो आपण गोटे healthy lifestyle भी रखंतु and try to maintain weight. Do not get overweight. जो आपण को खाइबा पीबा अच्छी. I know everybody is working. बहुत सारा sedentary lifestyle हे जाइची. We are almost sitting most of the time. Try to take out time from your life, busy life, and try to do some exercise every day. आउ रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीबडी इज बिजी सबू स्ट्रेस अच्छी लाइफ रे बट अध घंटा घंटाए टाइम बाहर करंतु निज पई टिके रिलैक्सेशन जो जिनस आपन को भलो लागे जोटा आपन हॉबी अच्छी स्पेंड सम टाइम ऑन योर हॉबीज व्हिच वी हैव आई थिंक स्टॉप्ड डूइंग दोस थिंग्स. तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सेटा आपन लाइफ रो स्ट्रेस टिके कमेबो एंड इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर फर्टिलिटी. सो हैव अ हेल्दी डाइट, इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग. ऑल दीज थिंग्स आर स्मॉल थिंग्स व्हिच विल हेल्प इन बूस्टिंग योर फर्टिलिटी. एक्चुअली मैडम जोटा कहले मु बस एड ऑन करिया पे चाहिए कि जो कपल्स माने बहुत ही भाबुचंदी कि हमर एया हबनी से हबनी. सो आई थिंक लिटिल बिट हाफ एन आवर 1 आवर समय काढंतु
कम्युनिकेशन करंतु परस्पर भितर इमेजिन करंतु कि आपण कॉलेज डेज रे बा आपण अर्ली डेज रे आपण केते सुंदर भाव रिलेशनशिप को मेंटेन करूथिले एंड ऑफ कोर्स आपण को वेकेशन इज मस्ट नीडेड हाँ आपण माने जदि प्लानिंग करूछंती ताले गोटे हेल्दी वे रे प्लानिंग करंतु एंड मैडम को सहित कंसल्ट आपण कर ही पारबे मैम थैंक यू सो मच आई मो भाबु जदि ऑल डिटेल रे हमें कथा कहले जो माने वीडियो देखते बहुत ही हेल्पफुल I would like to end. So I had a very interesting couple, na. So this is just a small story for everybody. So that couple was just started planning pregnancy 1 month ithila. They went to a doctor. Doctor did so many tests and they were under so much stress कि madam हमें तो एबे plan करू छु इतने सारा test करे देले. And I told them, see, everything is looking normal. You just go have a vacation. जोटा से कहिला, so I just remembered it. And they went that month, and that same month they got pregnant. And then they were so happy and so thankful to me कि madam आपण कहिले and we got pregnant. So that is very important. Spend time with each other. Give time to your pregnancy. Jodi if the tests are all coming normal, there is 90% chance that you will get pregnant. It is just the time that we are not spending together as a couple. You are not spending together. That may be a factor of not making you pregnant. सो हैप्पी रुहंतु एंड निज माने कपल रु पेरेंटहुड आड़ को जानतु थैंक यू सो मच मैडम Thank you. सो आई होप कि आज हमर पॉडकास्ट आपण पे बहुत ही हेल्पफुल हेथिबो एंड ऑफ कोर्स आपण को फ्रेंड्स रे फैमिली रे जो माने भी प्लानिंग करूछंती बेबी रो बा कोठी स्टक हे जैछंती कि आईवीएफ करबा ठीक ना भूल आई थिंक हमर पॉडकास्ट ही तांको क्वेश्चन आंसर सो आम चाहबू कि आपण आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आमे या कहूँ कि आपण हेल्थ रिलेटेड जहाँ भी किसी वीडियोस अच्छी आपण पाखे सब बड़े पहुँचवा दरकार शेष एति कहबी सुस्थ रुहंतु खुशी रुहंतु नमस्कार।